My greetings to all of you. These days in English, we are doing our chapter An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. In the first part of the video, we have completed 4 paragraphs. Let's continue our chapter with the 5th paragraph. Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours, and 34 minutes long. In my last video, I told you that Columbia lifted off on 16th January 2003, and that mission was for 15 days, 16 hours and 34 minutes long. वो वहाँ पर 15 दिन 16 घंटे और 34 minutes तक रहे. During this time, she went around the earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. और उस समय पर during that time she traveled 10.45 million kilometers in 252 orbits. धरती के 252 चक्कर उन्होंने लगाए. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. Kalpana Chawla was an Indian astronaut. Along with her, there were 6 more members. They were Japanese and they belonged to Ukraine. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. They stayed there for 16 days and they conducted 80 experiments. और वो experiments क्या थे? That if food could be grown in space and how stronger metals and faster computer chips could be created. They all cost about $56 million. On Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. Saturday की night को जब on 1st Feb the shuttle was coming back और जब उसके क्रैश होने की न्यूज़ आई, it shattered everyone globally. चारों तरफ बहुत ही शॉक और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है. Sadly, the news broke out and it left everyone with shock and grief. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. करनाल में, जैसे कि आप सबको पता है, शी बिलोंग्स टू करनाल, और उस दिन जो माहौल था मुझे आज भी याद है. आई स्टिल रिमेंबर कि कितनी खुशी थी करनाल में कि करनाल की बेटी स्पेस में गई थी एंड शी वॉज कमिंग बैक. तो दैट डे वॉज द वर्स्ट डे फॉर द करनाल. उस दिन करनाल के पूरे टाउन में सब लोगों ने बिना सोए रात बिताई एंड दे रिमेन ग्लूड टू देयर टेलीविज़न. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ग्लूड? चिपके रहना. ग्लू होता है चिपकाने वाला. कई बार आपके मम्मा भी आपको गुस्से में बोल देते हैं सारा दिन फ़ोन से ही चिपके रहते हो या सारा दिन टीवी से चिपके रहते हो. यू आर ऑलवेज ग्लूड टू योर मोबाइल फ़ोन्स, यू आर ऑलवेज ग्लूड टू द टेलीविज़न. तो यहाँ इसी सेंस में है कि लगातार आंखें टीवी पर गड़ाए करनाल के सब लोग बैठे रहे थे इस होप के साथ कि करनाल और उनके क्रू मेंबर्स बच जाएं, हमें ये न्यूज़ मिल जाए दैट दे ऑल हैड सर्वाइव्ड. अ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने लिखा था उस समय, शी वॉज अ हीरोइन. इट टेक्स enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. What he has written about her, that she was a heroine. वो एक हीरोइन थी और एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एक पोटेंशियल चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज चाहिए, एंड शी हैड दैट नॉलेज. इट्स नॉट ईजी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. You should have a wide knowledge of all the subjects, from biology to physics and to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedia knowledge to be an astronaut. Super specialization का means great expertise in a limited field or particular subject. सुपर स्पेशलाइजेशन करना आसान है. जब आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ लेते हैं तो आपको सिर्फ उसके बारे में स्टडी करना है. बट इफ़ यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट,
You should have a knowledge of a wide variety of subjects. आपको फिजिक्स, बायो, एरोनॉटिकल सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो कल्पना चावला had a wide variety of knowledge. Her achievement is awe-inspiring. She was a great inspiration for all of us. Her legacy lives on for being an inspirational woman for everyone. She was a great inspiration. She is a great inspiration for all of us. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. बहुत से यंग इंडियंस के लिए कल्पना चावला की स्टोरी, जो कि एक छोटे से टाउन करनाल को बिलोंग करती थी और जिन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और करेज से आसमान की बुलंदियों को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन. उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनी है. In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, when she was in shuttle Columbia, she sent a message to her students. In this message, what she said? The path from dreams to success does exist. उन्होंने क्या कहा कि आपके सपनों से लेकर आपकी सफलता तक का रास्ता हमेशा मौजूद होता है. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. उन्होंने कहा कि उस रास्ते तक जाने के लिए आपको एक दृष्टि चाहिए, आपको एक साहस चाहिए, तो आप उस रास्ते तक पहुंच सकते हैं. अगर आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको दृष्टि चाहिए, आपका विजन ऐसा होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए टू फुलफ़िल योर ड्रीम्स. फॉर दैट यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड, hardworking, and you should have the courage to get onto it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. उनके इस मैसेज के बाद, उनकी स्टोरी से इंस्पायर होके बहुत से यंग इंडियंस ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में सफलता के लिए अपना सफ़र शुरू किया होगा. So dear children, we have completed our chapter today. I will be sending the back exercises of the chapter that we have discussed in our live class physically and online also. Now on page number 53, there is a writing skill for all of you. Do you have a dream or something you very much wish to do? How you think you can make your dream come true? So you have to write this paragraph in about 150 words in your notebook to enhance your writing skills. You will be asked to read that paragraph anytime in your class. B part. Given below are some words that are spelled differently in British and American English. Fill in the blanks accordingly. You must have observed, dear children, that in this chapter there were some words like airplane, and there was one more word that was program. We used to say aeroplane in British English, but in American English it is spelled airplane. The spelling of program in British English is PROGRAMME, but in American English it is PROGRAM. There are some more words. I will be sending the pronunciation spelling of American accent also. So kindly note down and learn them in your books. Kindly note down in your books and learn them. That's all for today. Bye bye. Take care.